it's been a stunning turnaround by Peshawar Zalmi, led by this man in the bowling department, Amir Jamal. What an over in the end. You're talking about death bowling at its best. And he was well supported by Salman Irshad. The perfect length, Babar Azam, happy captain in the end, all smiles. Must be relieved considering there was that one point where it seemed like Islamabad United is pretty much cruising. They had 8 wickets in hand. Things were under control. But then some superb bowling by Peshawar Zalmi. This is exactly the kind of effort that they required, because that was one area that they were lacking in the last few games. Fantastic win for them, and they move on to the next stage. Just a quick reminder of how things went then for Peshawar Zalmi. 183 for 8 is what they made. Remember, they were put into bat first. Islamabad United fell short by 12. They were 12 runs. Sohaib Maqsood, the top scorer, 60 and 48. Hales as well. But it was Irshad and Jamal in the end who really set it up nicely for Peshawar Zalmi. Welcome to Pitchside once again. What a win for Peshawar Zalmi. It indeed is one that they'll remember for a long time, because it seemed like it was a comfortable chase for Islamabad United. But in the end, those last few overs really changed things for Peshawar Zalmi, courtesy that bowling spell by Amir Jamal and Salman Irshad. But of course, it was set at the top nicely by this man on my left. A very special guest joins us, Mohammad Haris and Bazid Khan as well. Haris, सबसे पहले तो बहुत-बहुत आपको मुबारक हो, because you moved on to the next stage in the HBL PSL. एक पॉइंट पे जैसे मैंने कहा, लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफ़ी कंफर्टेबल चेज है. तो उस पॉइंट पे क्या डिस्कशन हुई? वो जो एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, उसमें क्या डिस्कशन हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह अगर हम बैटिंग कर रहे थे पहले इनिंग्स में, तो हम यही बता रहे थे कि हमें खुद फिनिश करना है. जैसे मेरी भी बाबर भाई के साथ यही बात चल रही थी कि नए बैट्समैन के लिए मुश्किल है, तो हम भी यही सोच रहे थे अगर इधर एक विकेट गिर जाती है तो नए बैट्समैन के लिए उस तरह चलाना मुश्किल होता है. तो हमें बिलीव था और यही कह रहे थे, कप्तान भी यही कह रहे थे, कोच भी जब बाहर से आए स्ट्रेटजी टाइम में तो यही कह रहे थे वी जस्ट नीड 1 or 2 विकेट्स और फिर हम कम बैक कर सकते हैं. तो वही हुआ, हमने 1-2 विकेट ली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कम बैक किया. अच्छा, आपकी बैटिंग भी जो है, एक जो हम आपकी एक बड़ी रिफ्रेशिंग सी अप्रोच है टुवर्ड्स योर बैटिंग, जिसमें हम आपका हमेशा बात होती है कि आजकल T20 क्रिकेट की डिमांड्स डिफरेंट है. आपका स्ट्राइक रेट जो है माशाल्लाह पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा है. 180 से ऊपर पे आप चले जाते हैं. एक फेयरलेस अप्रोच है, तो हमेशा से आपकी इंटेंट ऐसी ही रही है और ऐसी ही रहेगी आगे जाके भी? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही होती है. जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको मैं फॉलो करता हूँ. और जैसे मेरा रोल मॉडल भी जॉर्ज बटलर है, तो वो जो क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड की टीम, मैं काफ़ी उनको देखता रहता हूँ, क्योंकि जॉर्ज बटलर भी उनके कप्तान है. तो मैं ख़ुद भी यही कोशिश करूँगा कि यही क्रिकेट खेलता रहूँगा. इसमें फेलियर्स आते होंगे, क्योंकि वो मैं ख़ुद भी एक्सेप्ट करूँगा और अपने फैन से भी कहूँगा कि वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं उसमें फेलियर्स बहुत आते हैं. तो कोशिश करूँगा कि जिस तरह का मैं खेल रहा हूँ तो उसी तरह मैं खेलने की कोशिश करूँगा. सम टाइम इसमें मुझे थोड़े वो भी टाइम भी लेना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इसी तरह खेलता रहूँ. हाई रिस्क तो आपने बताया, लेकिन स्टार्ट ये हम देख रहे हैं कि जो स्टार्ट से ही आप चौके पर, आज भी पहले बॉल पे चौका लगाया, तो क्या बाहर नेट कर रहे होते हैं, क्या चक्कर है? पहला बॉल मिडल करते जाते. असल में मेरी कोशिश होती है जब विकेट गिर जाती है ना, तो फिर जो नया बैट्समैन आता है वो थोड़ा टाइम लेता है, जिसकी वजह से जो अपोजिशन की टीम है उनको मौका मिलता है. 2-3 ओवर उधर डॉट मिल जाते हैं तो T20 का मोमेंटम टूट जाता है. तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो मोमेंटम होता है उसको मैं कैरी ऑन करूँ. उसमें मुझे रिस्क लेना पड़ता है, तो मुझे उन पर ट्रस्ट होता है कि अगर मैं यहाँ रिस्क लूँ तो मुझे कामयाबी मिलेगी. तो वही वजह है कि मैं मोमेंटम को सिर्फ कैरी ऑन करना चाहता हूँ. देखा ये है कि इवन जब आप ओपन कर रहे हैं या मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं तो एक ही तरह से खेल रहे हैं. आप खुद ज़्यादा कंफर्टेबल किस पोजीशन पे है? आप ये है कि आप पहले ही प्रेशर डाल दें, या विकेट गिरे तो फिर प्रेशर डालें, या किस स्टेज पे आप आना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह के हालात है तो साइम अयूब और बाबर भाई अच्छा खेल रहे हैं, तो अभी तो मैं 1 डाउन पे खुश हूँ. लेकिन सम टाइम आपको टीम के लिए स्ट्रेटजीज होती है कि लेफ्ट आउट हो जाएगा तो लेफ्ट ही जाएगा, राइट आउट होता है तो राइट जाएगा. तो सम टाइम इसकी वजह से भी आप पीछे हो जाते हैं, 5 पे चले जाते हैं या 6 पे चले जाते हैं. लेकिन कोई मसला नहीं है, जो टीम रोल देती है उसी पे उतरने की कोशिश करता हूँ. एक आखिरी सवाल ये है कि वो जो रन आउट हुआ था, आप पकड़ के रन आउट करते थे अगर बॉल मिस हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तभी तो मुझे मिस्टर गूगल कहते हैं, क्योंकि मैं उधर पहुंच गया था. मैं अपने साथ यही सोच रहा था कि अपनी टीम के लिए या कोई कैच रन आउट करूं, तो बॉल तो मेरे पास नहीं आ रहा था, वही मौका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आमिर जमाल ने डायरेक्ट थ्रो की. मिस्टर गूगल कहते हैं आपको? जी. अच्छा, इसका क्या पीछे क्या स्टोरी है?
इसके पीछे तो यही स्टोरी है कि नॉलेज ज़्यादा है और चालाकी है थोड़ी ग्राउंड में। अगर किसी यही वजह है कि बस चालाकी है। हर सवाल का जवाब अभी दे रहा है ना, जो एज एन आंसर फॉर एवरीथिंग। अच्छा नाम है मिस्टर गूगल, आपने मुझे दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको रेफर करूंगी, कोई चीज़ बता रही होंगी तो मिस्टर गूगल ही कहूँगी इंशाल्लाह। ये बताएं कि एक बड़ी अच्छी शॉट थी आपकी, खुद ही आप मुझे अब इसके बारे में बता भी रहे थे, जो एक छक्का मारने के चक्करों में आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। क्या वो नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या? जी बिल्कुल, उसकी प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी PSL से पहले। ये वाला जो शॉट है इसकी मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी पहले, और आज उसको अप्लाई किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन आज उस पर कॉन्फिडेंस आया तो मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली, चक्का हुआ है। तो इस पर मज़ीद मैं काम करूँगा। और ये एक सेफ़ शॉट भी है, स्पिनर पे अक्सर ये 45 सर्कल में होता है, अगर आप इसके ऊपर मार दे तो चौका छक्का आराम से मिल जाता है। बाबर की कप्तानी एंजॉय कर रहे हैं? वैसे तो आप उनके साथ ऑब्वियसली नेशनल साइड में भी करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है। डैरन सैमी की क्या कंट्रीब्यूशन है? बिकॉज यू नो ही पहले वो खुद कप्तान रह चुके हैं, और ज़ल्मी की बड़ी जिसे कहते हैं ना कि इंटेग्रल पार्ट रहे। जी बिल्कुल, डैरन सैमी भी काफ़ी समझाते रहते हैं, क्योंकि वो 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन है, तो वो माइंडसेट बाबर भाई को भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अक्सर मीटिंग में वगैरह में बोलते रहते हैं कैसे करना है, किस प्लेयर से कैसे काम लेना है, तो वो सारी चीज़ें नोट करता रहता हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है बाबर भाई के साथ हमेशा भी, नेशनल टीम में भी, यहाँ भी काफ़ी कूल एंड काम रहते हैं। कोई वो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कराते प्लेयर को, वो मौका देते हैं कि आप खुल के खेलो, आपकी जो मर्ज़ी है, जिस तरह खेलना चाहते हो। सिर्फ समझाते हैं कि इस स्टेज पे कैसे खेलना है या इस स्टेज पे कैसे खेलना है, तो काफ़ी अच्छा लगता है बाबर भाई के साथ। ओके मिस्टर गूगल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। That's your name from now onwards, because you've given the secret away now, though, that he's called Mr. Google because he has an answer for literally everything. Thank you so much, Haris. And because we're talking about Haris, you know, he really set things up nicely at the top for Peshawar Zalmi. He's also our master blaster for today. Yeah, brilliant. First ball, very first ball that he faced, and it went to the fence. So that's the impact that he makes, and the ability to just hit the ground running and make sure that he carries on. I think that is a very impactful innings. 34 of 17, switches the momentum and keeps the pressure on. All right, I've now been joined by Waqar Yunus in the studio. Mohammad Haris leaves us. Waqar भाई, हारिस की अभी हमने थोड़ी सी आपको झलकियाँ दिखाई इनिंग्स की। एक जो रिफ्रेशिंग बात नज़र आ रही है, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो हारिस हो, एक अच्छी इंटेंट के साथ जो खेलना नज़र आ रहा है, एक वो फेयरलेस सी अप्रोच नज़र आ रही है। आपको कितनी अच्छी लगी हारिस की इनिंग्स, और अभी तक जितना भी आपने उनको देखा है खेलते हुए, आपको उनकी अप्रोच कितनी अच्छी लगी? देखिए, फ्यूचर जो है वो ब्राइट है पाकिस्तान का। आई थिंक ये जो नाम आप ले रही हैं, साइम अयूब हो गया, हारिस हो गया, दे आर द नेक्स्ट जनरेशन। एंड आई थिंक जिस तरीके से ये T20 क्रिकेट को अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। आई मीन दे ऑल वंडरफुल क्रिकेटर्स, बड़े अच्छे हाथ चलते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और सबसे अच्छी बात है फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, घबराते नहीं आउट होने से। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। T20 क्रिकेट में जितने भी प्लेयर हैं उनको इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। उनके एक ओवर, जैसे बॉलिंग में भी देखा, 1-2 ओवर कोई ऐसे होते हैं जहां पे आप गेम चेंजर होते हैं, गेम चेंज कर देते हैं। तो सेम गोज़ फॉर द बैट्समैन ऑल्सो। 17 गेंदों में 34 आप अगर देखेंगे तो 34 ही रन किए, लेकिन वो जो 34 रन का इम्पैक्ट था वो बड़ा फ़र्क डालता है। सेम गोज़ फॉर साइम अयूब ऑल्सो बिकॉज ही प्लेड रियली वेल टू। अच्छा, ज़ल्मी की बॉलिंग तो अच्छी थी ही, वो तो एक नज़र आ रहा था जिस तरह से उन्होंने एफर्ट किया, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहाँ गलतियाँ की? दे वर आल्सो क्रूजिंग एट वन पॉइंट, यू नो, जस्ट दे हैड 8 विकेट्स इन हैंड, सो कहीं ना कहीं तो कुछ नहीं, गलत हुआ। क्रूजिंग तो नहीं। देखिए, पहली इनिंग में भी यही सॉर्ट ऑफ ट्रेंड रहा कि पहले 10 ओवर जब जूनियर बॉल नया था तो बल्ले पे आ रहा था। जब वो थोड़ा सा पुराना हुआ है तो बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था। प्लस वकार भाई बड़े खुश थे आज क्योंकि बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रहा था। पहली इनिंग में भी हुआ, और जब पेशावर ने बॉलिंग की तो तब भी हुआ, और ज़्यादा हुआ। तो उसकी वजह से आई डोंट थिंक इट वाज सो इजी। अगर मैच चेस करके जीतता था, जो पे यहाँ पे डेटा जो कहता है, जो स्टैट्स कहते हैं कि अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन अगर चेस करके जीतना था तो आपको पहले 10 ओवर में बहुत ज़्यादा आगे गेम से जाना चाहिए था। आपको ये छोड़ना चाहिए था कि आखिरी 10 ओवर में आपको 7 या मैक्सिमम 7.5-8 की एवरेज चाहिए हो, क्योंकि हमने देखा कि बाद में बहुत मुश्किल हो गया था।
एंड पेशावर ज़ल्मी का आपने मोहम्मद हारिस की बात सुनी होगी, बट पेशावर ज़ल्मी के लिए सिर्फ मोहम्मद हारिस नहीं, बाबर आजम भी हैं जो कि उनकी अब कप्तानी भी कर रहे हैं. ही इज़ perhaps the most consistent performer, चाहे franchise cricket हो, चाहे national side हो. He remains to be somebody who performs every time that is expected of him, which is why he features in our numbers game today. Well, this is the stat attack, apologies, and stat attack में भी आपको नजर आ रहा है कि most 50 plus scores बाबर आजम 10 इनिंग्स में 6 50 प्लस स्कोर्स हैं इनके. एंड लाइक आई सेड, चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, चाहे किसी भी फ्रेंचाइज के लिए ये रिप्रेजेंट करें, ही ऑलवेज इज एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट विद दोज 50s and is definitely one person who any opposition would want to get out at any given time. All right, that was the stat attack for you. Incredible day for Peshawar Zalmi and their fans. There was a lot of noise around this ground when they won because they managed to turn things around just at the right time. So we'll take a short break and we'll be back and discuss this match in more detail. Well, things were looking good for Islamabad United until Amir Jamal decided to come to the party. He was nailing his Yorkers, and for his 2 for 36, he's also our player of the match. Yeah, he was just fantastic. I mean, the length he bowled, ball coming in. There was a little bit reverse swing. Abhi Bazin ne mentioned ki, and this was a beauty. This was a game changer. You know, you can still clearly see कि जिस तरीके से वो pumped up था और जिस तरीके से वो wicket लिया और फिर then he was so careful throwing the ball at stump, but he aimed it right. This was another turning. There were a few turning points in this game. This was another very, very crucial moment of the game. We were talking about Amir Jamal. Waqar bhai, aap surprised the at all with his pace, or were you expecting it? I was not expecting it, not this much, but I always knew that this kid has got something about him because ये पाकिस्तान के लिए जब इंग्लैंड से भी खेला था, and I was in the com box and I always thought कि he's got what it takes to be in the top side क्योंकि इसका action इसको allow करता है कि he can generate more pace. Even I still feel that he can generate little bit more pace क्योंकि इसके थोड़ा सा action में थोड़ा सा changes आएंगी and he can generate more pace. He's a side on bowler and he's very fit. सबसे जो important चीज़ है वो fitness and I think he is super fit. He's good with the bat in hand, batting भी ठीक ठाक कर लेता है and he's very very good fielder. So I think what else do you want? He's a ideal. दो चार और भी अच्छी चीज़ें हैं. तो बाउंसर इसका तेज़ है, अभी इसने आज बाउंसर नहीं किया, बाउंसर इसका तेज़ है. प्लस ये सारी क्रिकेट खेला है इस्लामाबाद में. एक ये अच्छी चीज़ है और एक और चीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन जिस क्लब से खेला ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त है. ये बाद में कभी चेक करेंगे. ये भी दस दो कि मियां वाली का भी है ना. बहुत ही अनबायस्ड पैनल बैठा हुआ है हमारे साथ. बहुत ही अनबायस्ड है. No loyalties towards any of their series at all whatsoever. But I mean, Baz, just on Amir then, we're talking about his bowling. But he can bat as well. I mean, we've seen that. We're talking about having that, filling that all-rounder spot within the team. Yes, and he wants it. He wants the big occasion. He's not shying away from the big occasion. जब भी ऐसा सिचुएशन होगा, जैसे वो इंग्लैंड का मैच है, he wants to, मतलब वो चाहता है कि मुझे बॉल मिले, मुझे उस वक्त यूटिलाइज करे, मैं हूँ at the center. And that's a sign of somebody who's very confident in his ability, and also the fact that he is I won't say big match player right now, but he's one who wants to be in the thick of things, and that is a big quality to have. And today, मतलब जब उसका बॉल रिवर्स हो रहा है तो डिफरेंट बॉलर है. नॉर्मली ये जो बॉलिंग करता है तो हिज विकेट टेकिंग डिलीवरी इज द बाउंसर. टुडे बिकॉज बॉल रिवर्स हो रहा था तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहा था. तो इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट what type of bowling I have to, मतलब particular stage of the game, which type of bowling I have to do.
And he's also from Islamabad. Huh? That's the biggest point. He's not from Islamabad. He's played most of his cricket from Islamabad. लेकिन वो club research कर लेना जिस club से वो खेल. We're talking about him loving all the big moments. You heard it from Baz and Waqar that he loves being out there when it matters the most, and that's what we saw from him. The big prized wicket was always going to be Alex Hales, and it was Amir Jamal who eventually got him. He features in our switched on moment of the day. इस तरह की बॉल मुझे बहुत एक्साइट करती है. I don't know why, but just a perfect yorker. I don't think you can nail a better yorker than that. I mean, Alex Hales was striking the ball so clean and get that delivery right where he wanted. It was just brilliant, brilliant. You spoke about that Yorker. और Yorker की बात करें तो मेरा ख्याल है वकार भाई से ही बात करनी चाहिए. नहीं, I mean you are the king of those reverse swinging Yorkers, and to see him इस तरह से at that pace. I mean, ये बताएं नेट में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है to be able to execute it like this, क्योंकि आपने तो सारी उम्र ये काम किया. ये वो बात आ जाती है ना, मैंने पहले जो बात की है कि he is fit. जब आप फिट होते हो तो then you can execute your yorkers at will and the length he wants to ball to, and as you can see his energy, his power, all the energy goes into those fingers, and when it's reversing, I mean that sort of action sideways, all the it's like boxing, it's like punching, and he punches it beautifully. One person who needs to punch it more beautifully is Wahab Riaz, because उसकी थोड़ी bowling जो है उनकी struggle कर रही है. बाजिद, थोड़ा सा is it a concern at all कि उनको उस तरह की wickets नहीं मिल रही? शायद ये साल उनके लिए उस तरह से रहा नहीं, because जब आप eventually next stage पे progress कर रहे होते हो तो आपके सारे areas covered होने चाहिए. Did you say that he needs to punch Wahab, is it? नहीं, ऐसी बात नहीं है. ऐसी बातें ना करें ना वकार भाई, आप क्यों फजूल की कंट्रोवर्सी. अक्सर ये होता है कि जो नॉकआउट गेम्स होती हैं, जो नॉकआउट स्टेज, तो योर बिग प्लेयर्स नीड टू स्टैंड अप, एंड नाउ मतलब जिस तरह भी उनका सीजन गया है, the next game is the biggest game that they play, so he needs to stand up. Yes, today he wasn't on song, but वहाब का ऐसे ही है, इट्स बूम और बस्ट. जब वो या तो टीम को दौड़ा देते हैं या फिर अपनी टीम इनकी दौड़ जाती है. ये उनमें काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा स्कोर दे देते हैं या फिर मैच चेंज कर देते हैं. लेकिन अच्छी बात ये है इस मैच के बाद कि अब आपके पास, वकार भाई ने बात की गेम ब्रेकर्स की, अब आपके पास ऑलमोस्ट 3 गेम ब्रेकर्स हैं, वहाब, सलमान इरशाद और आमिर जमाल. तो अगर इसी ग्राउंड पे मैच होना है, अगर रिवर्स स्विंग हो रहा हो तो वहाब भी रिवर्स स्विंग के एक्सपर्ट हैं. ये तीनों गेम ब्रेक कर सकते हैं. बट अच्छी बात, एक और अच्छी बात ये है कि दिस क्रिएट्स अ प्रेशर फॉर अदर बॉलर्स आल्सो. अब इस पूरे HBL PSL में देखा है कि नए लड़के सामने आए हैं. हर साल सामने आते हैं, लेकिन इस साल जैसे जमान सेलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान से, एहसान उल्लाह सेलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान से. अब ही विल बी नॉकिंग एट द डोर आल्सो, क्योंकि हिज बॉलिंग, इरशाद बॉल्ड रियली वेल. सो all these I wouldn't say veterans, but like जो हमारे senior bowlers हैं, they have to really step up. I mean crucial times पे that's what you expect from an experienced player, कि इस वक्त अपनी all जो भी experience है, bring it to the table and win your team a game. Right, he still got a chance though, because Peshawar Zalmi has won this one and he's got a chance to redeem himself with a better bowling effort. But of course, Peshawar Zalmi is going to be celebrating tonight. We'll take a short break, and when we're back, we'll be joined by a new guest. Well, Peshawar Zalmi will be facing Lahore Qalandars in their next match, courtesy that fabulous win today. We saw some great death bowling, some great batting as well, and I'm sure that their fans are going to be elated. Now, I've been joined by Mark Butcher in the studio. Butch, would you attribute this win to some fantastic bowling by Peshawar Zalmi, or was it just a case of Islamabad United losing control somewhere, some soft dismissals? I mean, what are we attributing this win to? Definitely wasn't soft dismissals.
I mean, these guys were ripped out by magnificent death bowling, reminiscent of Waz and Wakar back in the day. The one thing I would say is that the two innings mirrored each other almost perfectly. You know, the Zalmi looked as though they should have got 200, 210 with about 7 overs to go. And then the ball started to reverse swing a little bit, grip towards the back end, and that meant that they only made 183. Islamabad were cruising it, absolutely cruising it, and then suddenly around the 13th, 14th over, the ball started to reverse a little bit. Suddenly there was a lot of swinging and missing going on, and the boundaries dried up, and then the game turned into a real battle, didn't it? And it just was a case then of who was going to keep their nerve the best. And I think that, you know, the Zalmi bowlers, their captain Baba, the instructions from Sami off the field all combined together that meant that they kept their heads, and Islamabad United perhaps lost theirs a little. But even if they'd been cool as a cucumber, they might not have been able to do anything but those Yorkers. And you know, because you're talking about their Yorkers, we're talking about their length and how they were able to execute their plans at the death in particularly well. Let's have a recap of Islamabad United's wickets. Yeah, first to go was Ramanala Gurbaz. He was a little bit unlucky actually. That fielder was up saving the one at third man. It almost turned into a slip catch. Then Shoaib Maqsood, who played brilliant in 60 from 48, knocked over by the first of the Yorkers. Azam Khan, huge moment. That's when the belief started to flood through the Zalmi bowlers and fielders. Alex Hales was knocked over in the very next over by Ahmed Jamal. And from that moment onwards, it all went horribly wrong for Islamabad. A massive sort of problem for Fahim Ashraf, a man who's been very calm for them at the death, seeing them home. Colin Monroe's innings, well, it wasn't one of the ones that he will remember very fondly throughout the rest of his career. And at that moment in time, it was the Zalmi's game. Absolutely, the rate had skyrocketed. We're talking about those Yorkers that we saw at the death. Well, one thing that you require with those Yorkers is a lot of pace. When you've got both, then you get the kind of results that we saw today by Peshawar Zalmi. It's time to have a look at the fastest delivery of the day. Well, normally you see that from Ahsanullah, maybe Wahab, but this time around, this was this youngster who bowled some pace, some heat, and some good, really length bowling and picked out wickets also. 150 he clicked. Amazing. He never did that before. It's not a day that belonged to Islamabad United. We saw that with the bat as well, with the ball, and also in the field. A bit sloppy at the start, but we did see one brilliant take. That was by Mubassir Khan, and he features in our safe hands for the day. Jimmy Neesham unable to find the boundary at the back end of Zalmi's innings. Hit one miles up in the air. Nibazir made really good ground running round to his left and pouched the catch. And at this moment in time, he felt that Islamabad United had got themselves right back into it, and it was due to good hands like this. Kept his eyes on it all the way. Head level. Safe hands indeed. You beauty. Also from a confidence point of view, Butch, I mean, you look at Peshawar Zalmi and how they've played in the last few games. They've conceded over 200 runs in Pindi. I know it's a different ground altogether, but that was the one area where they were sort of lacking. Today, their bowling has stepped up. Yeah, absolutely right. I mean, they had nothing going for them, admittedly, with the ball. There was no reverse swing, and the boundaries a little bit smaller, etc. at Pindi. But, you know, your confidence takes a massive dent when you lose 2 games like that, where you should never lose 240 on the board. But they had a bit of a chance to have a think about it. I think also the batting was had a bit more intent to it as well, even though they didn't make as many runs as that. But there was certainly a feeling that they weren't going to, sit around and wait for other people to score the runs for them. And I think that the death bowling was absolutely superb. It was wonderful to see 2 young guys do it as well. They could have given the ball to Wahab, couldn't they? Wahab, even Sami was saying, Wahab, give him the ball. But they trusted the 2 youngsters, and they bowled magnificently for them. Yeah, they have people who have been stepping it up for them. Khurram Shahzad in that last game, remember, in Pindi, did really well. And now we've got other boys who are stepping it up. So it should be an interesting game against Lahore Qalandars. For now, we'll take another break.
We've had some great crowds throughout the HBL PSL. Decent crowd in today, perhaps slightly affected by the rain, but you could hear the support for Peshawar Zalmi, all the fans in the house creating so much noise for them. Let's hear their thoughts now in the ringside view. मैं यहाँ पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट करने आई हूँ और मैच बहुत ज़बरदस्त था। बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ मैच का। मेरी टीम आज इस्लामाबाद थी, मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा था। अच्छी खेली है, लेकिन बैड लक के हम जीत नहीं पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में अच्छा कमबैक करेंगे। बाबर ने बहुत अच्छा खेला है, आखिरी के ओवर्स उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और एंड में जो आउट किए हैं उसकी वजह से पूरा मैच बदल गया, बहुत अच्छा लगा। मैं ये इस्लामी यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही थी, ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बट बेसिकली जो पेशावर ज़ल्मी उन्होंने बहुत टफ उनको कंपटीशन दिया था, इसलिए शायद वो थोड़ा हार गए, बट ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। इस्लामाबाद की जो एफर्ट्स थी, जो स्टार्टिंग का एलेक्स हेल्स और शुएब मकसूद की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी अमेजिंग थी। उसके अलावा बॉलिंग लाइनअप तो ऑलरेडी इस्लामाबाद के पास बहुत अच्छी है, लेकिन एट द एंड कुछ प्लेयर्स की या अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसी सिचुएशंस का बनना और इरशाद का बड़ा अच्छा बॉल कर रहा, ये बड़ी चीज़ें मैटर की हैं। और लेकिन जैसे भी हारा है, लेकिन एक अच्छी गेम थी, एक अच्छा मैच देखने को मिला। Wherever Babar Azam goes, Waqar, it seems like the fans follow that team. We saw that with Karachi Kings as well. You know, in Karachi, people were coming out just to see him. And today as well, the amount of mentions that we've had. I mean, Butch probably doesn't understand Urdu, but he's heard Babar's name a couple of times at least in that video. Yeah, more than a couple of times. I mean, Babar is a superstar without any doubt. I mean, there are very few batsmen in the world who are complete batsmen, and I think he's up there in the top three. And also remember that Zalmi trading him from Karachi, bringing him to Peshawar, and the way he's performing and also captaining, I think he's maturing quite nicely. He's a lot more calmer at on the ground, and his batting makes a difference. I mean, his strike rate is improved, so he started getting the hang of T20 cricket, and I think he's going to be wonderful in coming years, not only for Peshawar but also for Pakistan. Yeah, and we're talking about having a lot of fun as well on the field. The cricket is great, but so is the fun that we see. Hassan Ali, you know, you can't keep him out of the action. He is somebody who's quite a character actually, and he features in our Masaledar moments of the day. Zainab, as you said, character. Cricket always look for characters, and he's one of a good characters. I mean, has seen some really highs and lows of the game, but he keeps himself really going and happy. Right, tomorrow's game, Butch. It's a big one. Lahore Qalandars are facing Peshawar Zalmi. I mean, both the sides have their element of weaknesses. I mean, there's no side so far that you could just perhaps call it to be perfect. This is what we have tomorrow lined up for you. Eliminator 2. You saw Eliminator 1 today. Peshawar Zalmi won that, and they are up against the home side, Lahore Qalandars. I can tell you that the buzz around the ground is going to be fantastic because the home side is playing and they have another chance. You know, lost their game against Multan Sultans. But how do you weigh both the teams against each other in this contest? I think they're both flawed in similar ways. I tell you what's going to be interesting tomorrow, and I'm going to be out there in the middle watching it very, very carefully, and that's the toss. Because both teams are going to be desperate to defend, aren't they? They're both going to want to bowl second. You know, they won't do an Islamabad United. Neither of them are going to win it and decide that they're going to chase. And so that's going to be pivotal. Lahore Qalandars, every time that they've had the chance to defend a total of 1 and 1 easily, even when they only put 148 on the board against the Gladiators early on here in PSL 8. And then, of course, you know, the way that Zalmi defended just now, and also the way that Babar plays, he'd quite like to get out there and get the chance to bat first. So that is going to be
absolutely pivotal. Both bowling attacks are going to have a lot of confidence, aren't they? Yeah. That's going to be the main thing. Both bowling attacks are going to be confident. The batting perhaps in the middle order, middle to lower order, maybe just a little bit wanting, with Lahore Qalandars perhaps having the whip hand with people like David Visa down there and Sikandar Raza. That might give them a little bit of an edge against the Zalmi, but there's not much in it. Your thoughts, Waqar, on tomorrow's game? Look, I know Bush just mentioned Lahore Zalmi's bowling second and winning it comfortably, but don't forget that they've lost comfortably also when they're batting second. So toss, as you said, is very crucial, but you cannot really trust as those two big names, big captains. You know, in a stage where you go home or you win and you go in the final and look for that victory. So I don't think one should rely too much on the toss. I know it's important, but you got to really for these play two teams. That's what I mean. You know, more than anybody else, both these teams would be desperate to defend. I know that. I hope that they don't sort of, you know, standing and watching like we will be at the toss and who's going to win and who's going to lose. Because if the teams do that, that's a problem. All right, gentlemen. Thank you so much. I think it's time to go home for us as well, because we have to be back within 24 hours for the big one. It's going to be Lahore Qalandars and they'll be taking on Peshawar Zalmi. Don't forget, though, that the final also has been moved. It was initially on Sunday. Now it's going to be Saturday. Keeping in view all the weather forecasts that we've had, it should be a cracker of a game, though. We're gearing up nicely for that one, and tomorrow is the big game as well. So we'll see you guys tomorrow, and we'll leave you with some super moments of the day. Home or away, we are not afraid. We don't do a thing if we don't do it for the game. We will rise up to the fight and feed the fire of our lives. These one on tayari klalozan nang saraga talu para waqtira rawan. Rana da di asmaruna da sizan khlasul rana da the Peshawar Zalmi da